नमस्कार भाई और बहन, आप बने हैं करोड़पति, वो भी घर बैठे। नीचे दिए गए नंबर पर फोन घुमाइए और अभी के अभी बहुत बड़ी धनराशि पाइए। हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है 325876। Pranam. I am Pratikshya Mishra and you're listening to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. और आज के एपिसोड में I'll tell you Do I Like Jamtara Season 2. In life, things happen. And even if nothing's happening, that's still something happening, right? So on this show, we talk about things that happen. We get an esteemed panel of highly jobless people to answer the million-dollar question. Do I like it? You think one scam is a problem? Jamtara Season 2 tells you that there is so much more to worry about. इस सीजन का टैगलाइन होना चाहिए Innovation and You. I'll admit, I watched Jamtara Season 1 because I had to review Season 2 and honestly, my bad, dude. जिंदगी के 12 घंटे दिए मैंने इस शो को and I actually don't regret it. I loved Season 1 का chaos and drama. So do I like Season 2? उसका जवाब देने से पहले you should know that you can check out our other episodes once they're out of course and other podcasts from the Quint on our website or wherever you get your podcasts from because quality content किसे पसंद नहीं है यार. Coming back to Season 2, do I like the performances? इस बार विलेंस की तादाद थोड़ी बढ़ गई है. अमित सियाल का कैरेक्टर ब्रिजेश भान तो है ही और पूरे फॉर्म में है इस सीजन में भी, पर मुझे सबसे ज्यादा डर तो सीमा पावा से लगता है यार और उनके कैरेक्टर बुआ जी से. Another noteworthy performance besides हमारे दो भाई सनी एंड रॉकी, that is स्पर्श श्रीवास्तवा एंड अंशुमन पुष्कर, is that of मोनिका पनवार as गुड़िया. बहुत तरक्की की है गुड़िया जी ने इस सीजन में. उनका जो रिवेंज प्लॉट है अब पॉलिटिक्स में समा गया है. दिस डेविड वर्सेस गोलायथ बैटल इज नाउ गोलायथ वर्सेस डेविड एंड गोलायथ की बुआ जी. मेरे फेवरेट क्राइम फाइटिंग डुओ भी लौटे हैं, अक्षा परदेसानी एज डॉली साहू एंड मेरे चहीते बिस्वा पाठक प्लेड बाय दिव्येंदु भट्टाचार्य. ही इज सो फनी, स्पेशली व्हेन ही कंफ्यूजेस अ VPN एज अ विपिन दैट ही हैज टू अरेस्ट. इट इज कॉमेडी गोल्ड. अच्छा लगता है यार थोड़ा सा गुड कॉप बैड कॉप रियली ट्राइंग हिज बेस्ट कॉप. You know how films use that like yellow filter whenever they're showing India और वो पीछे से वो ढोल वाला म्यूजिक बजता है. You know, DOP सायक भट्टाचार्य doesn't do this to Jamtara. Thankfully, उनके frames सुंदर हैं, rustic भी हैं और काफी real भी हैं. And what more could you want from a show honestly than it to just look gorgeous along with its plotline? The music and sound by Siddhant Mathur and Bobby John create a landscape with their art, though sometimes it might be a bit too much. Jamtara Season 2 Season 1 जैसा नहीं है क्योंकि आर्क्स ज्यादा है और पॉलिटिक्स और पावर का जो सिनिस्टर अंडरबेली है उस पे भी ज्यादा तगड़ा फोकस है. एक बात है कि सीन्स पर थोड़ा लाइट अगर ज्यादा पड़ता तो अच्छा होता. कुछ शॉट्स इतने अंधेरे में हैं कि मुझे मेरी ही शक्ल घूर के अपने फोन से देख रही थी. अपनी ही आंखों में आंखें डाल के कौन देखना चाहता है जमतारा. For a show that has such intricate and heavy plots as Jamtara, उनके डायलॉग्स अच्छे होना बहुत जरूरी है. एंड जमतारा के डायलॉग्स आर एक्चुअली ग्रेट. वो अपने कैरेक्टर्स के लिए सही बैठते हैं, सिचुएशन के लिए सही बैठते हैं एंड इट ड्राइव्स द पॉइंट अक्रॉस टू एन ऑडियंस. लेकिन इस सीजन में एक तकलीफ थी, ये जो माँ बहन की गालियां पूरे शो में है. आई पर्सनली एम नॉट अ फैन ऑफ द कॉन्सेप्ट बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर इन दिस शो. It say maybe lends to an authenticity, but there needs to be an upper cap on these things because there's a 3-minute scene where someone or the other has given a gali and there are like 19 of them if I counted that right because I did go back and count. और dialogues जब इतने अच्छे हों लेकिन वो जब abuses के नीचे दब जाते हैं तो उनका effect कम हो जाता है. And that's exactly what happens in this scene as well. You'll know when you watch it and it's a very gut-wrenching serious scene, but it gets overshadowed by the repetitive abuses because it seemed like that to me. It is actually well known that when you make content and tap into emotions like fear or say grief, it leads to a sort of catharsis that humans actually really enjoy when they're watching content. It's why horror and thriller things are so popular. You can see how thrillers have just started popping up everywhere you go, in OTT and cinema, everywhere. And I guess Jamtara taps into such a specific fear of human nature. वो जो scam होने का डर है, that bothers us all the time. बचपन से लोग बोलते हैं कि अपना CV भी शेयर मत करो, ईमेल में कोई लिंक आए तो उसे क्लिक मत करो.
कोई रैंडम आपको कोई कॉल करे तो उसका नंबर मत उठाओ. वी ऑलवेज हियर दिस एंड दिस फियर हैज बीन इंस्टिल्ड इन अस. सो दैट्स प्रॉब्ली ऑल्सो वाई जमतारा इज सो इफेक्टिव, क्योंकि वो इस डर पे टैप इन करता है. एनीवे, it might not retain the charm of the first season, but it's still really, really good. Chaos, murder, scam के अंदर एक और scam, सब है जमतारा में. And it kind of is a little sucky to say this, but मजे तो आए. So, do I like Jamtara season 2? Of course I do. You just heard all of that. पर ये शो देख के मेरे अंदर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का खौफ आया है, उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा. PS, ये विशेष सूचना जनहित में जारी. अपना पिन या CVV अपने सीने से लगा के रखें. Also, if you've never watched Jamtara, but you like shows like, say, Mirzapur, but you wish they were like a little less in your face, make this your weekend watch for sure. Both seasons of Jamtara are streaming on Netflix. Tudum. And that was this episode of Do I Like It? Follow us on Instagram at The Quint and tell us what you want us to talk about next week. And check out our website, thequint.com, for more groundbreaking reports and videos. This was Pratiksha signing out for now, and I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast hosted by Pratikshya, executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor, produced and edited by Anjali Palod, written by me, Pratikshya, again, with theme music from BMG Production. Thank you for listening. You were listening to the Quint's podcast.